हेलो फ्रेंड्स, वेलकम समस्त को स्वागत पेडागोजी सिलेक्टेड एमसीक्यूज इंग्लिश पेडागोजी रो आज सेशन को गुड मॉर्निंग। केमती अच्छो सब? रविवार मौका देखी चक्का मारदवा। चौका नो चक्का। तो स्टार्ट करवा आज इंग्लिश पेडागोजी पेडागोजी जहाँ कहले भी चलो। इंग्लिश सहित टिके बेसी कनेक्टेड अच्छी तो इंग्लिश पेडागोजी कहि परिबा। बट जो मन इंग्लिश पेडागोजी दरकार नहीं तंकर पेडागोजी हिसाब रे ये दरकार। हम्म आसिल जदि स्टार्ट करवा ठीक फ्रेंड्स मान सहित शेयर भी कर दियो आउ लाइक भी कर दियो। भलो अच्छा समझते ओके आसी जाओ जल्दी 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 स्टार्ट करवा। चलो तो कौन अच्छे क्वेश्चंस देखियो जहाँ तुम कह सेटा ही फाइनल आंसर मोर किसी कहबार ना। आउ 50टा क्वेश्चन करवा 50टा क्वेश्चन कले एक्जाक्टली केते परसेंट रोचे सेटा भी कैलकुलेट करि परिबा केते मार्क रहिला सेटा भी कैलकुलेट करि परिबा। स्टार्ट करवा आज सेशन। समस्त को एक्सप्लोरिंग गोल्स को स्वागत। वेलकम ऑल ऑफ यू। कीप एक्सप्लोरिंग कीप इंस्पायरिंग। ओके हाँ सुप्रभा डोर खोली गला। आसी जाओ जल्दी जल्दी यस। चलो तो तुम मैंने जानिछ जे हमर एप्लिकेशन रे एक्सप्लोरिंग गोल्स आपरे डिफरेंट कोर्सेस अवेलेबल अच्छी यू कैन गेट इट ओके एंड जदि किसी डिटेल्स जानिबार अच्छे नंबर व्हाट्सएप करि परिबो जो नंबर दिया जाइए एक्सप्लोरिंग गोल्स एप्लिकेशन रो लोगो एटा जोटा तुम गूगल प्ले स्टोर रे एक्सप्लोरिंग गोल्स सर्च करके मध्य पाई परिबो। ता सहित हमर टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करने को भूलिबनी एंड तुम मैंने एक्सप्लोरिंग गोल्स एप्लिकेशन को तुम कंप्यूटर रे मध्य यूज करि परिबो। जो लिंक दिया जाइए लिंक रे क्लिक करके स्टार्ट करवा आज सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। यस आराम से करियो। प्रथम प्रश्न आसी जाइए। एक ललिता a teacher of young learners provides them with opportunities to play with clay water and sand so as to कहीं ललिता एमती करते। यस फ्रेंड्स जहाँ कहब ता सहित जीवी एंड मु भावुची आज 100% समस्त ठीक कर। हाँ जोटा भूल हो पुणी देखा किसी व्यस्त नहीं अंडरस्टांडिंग आज डेभलप होवार अच्छी एंड सी ललिता कौन कर यंग लर्नर्स मान को पढ़ाऊँ एवं प्रिपेयर कर अपरच्युनिटीज दौरान प्ले विथ क्ले वाटर एंड सैंड को लेकिन खेल दौरान माने डाटी देयर हैंड सो दैट दे मे लर्न टू वाश देम एटा तो केबे भी नुहे जे मैला कले से माने निजको सफा करबा शिखिबे सेति पय मैला करूचे। प्लीज प्लीज देम एंड मेक देम हैप्पी ये भी हेई पारे गोटे रीजन। एनकरेज प्ले विथ नो अदर ऑब्जेक्टिव सेमती किछि नाही। build fine motor skills especially for of the fingers and thumb the fine motor skill ro development करा जाउची please them and happy करा जाउची तो happy करा जिबा एटी नुह एठी मेन मोटो होची fine motor skill finger और thumbs रो develop करिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया समस्त प्राय ठीक करिछो। Marry a young teacher believes in personalized learning
because she thinks that. Yes, every person must be exposed to learning. Every learner is unique and need to be given a chance to develop to the best of their ability. All learners must learn on their own. Children must enjoy their learning. ସବୁ ତ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି ବଟ୍ ପର୍ସନାଲାଇଜ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଭ୍ରି ଲର୍ଣ୍ଣର ଇଜ୍ ୟୁନିକ୍, ସେଥିପାଇଁ ତ ପର୍ସନାଲାଇଜ୍ଡ ୱାର୍ଡଟା ୟୁଜ୍ ହେଲା। ଯେହେତୁ ୟୁନିକ୍ ସମସ୍ତେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ହଁ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ତ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍, ସେଥିପାଇଁ ତ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଯେହେତୁ ଅଛି, କଲଚର ଅଲଗା, ନେଚର ଅଲଗା, ହଁ, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଲଗା, ନର୍ଚର ଅଲଗା, ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଅଲଗା, ସବୁ ଅଲଗା, ସୋସାଇଟି ଅଲଗା। ତ ତାରି ଭିତରେ କେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ପାରିବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସକୁ କ୍ୟାଟର କରିବା ପାଇଁ। ଆଇଇପି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆଉ ୟୁନିକ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ୟୁନିକ୍ ଏବଂ ନିଡ୍ସ ମଧ୍ୟ ୟୁନିକ୍। ଆନ୍ସର ହେବ ବି। A teacher can cater to the learning styles of all the children by. Yes, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ପଢୁଛ ସମସ୍ତେ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍କୁ କ୍ୟାଟର କରୁଛନ୍ତି ଟିଚର। ଟିଚିଂ ଏଭ୍ରି ଲେସନ୍ ଥରୋଲି ଆଣ୍ଡ ରିଭାଇଜିଂ ଦ ଲେସନ୍, ଏଇଟା ବି ହେଇପାରିବ। ଟେଷ୍ଟିଂ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି, advising the children to join drawing, dance, music classes, এটা କେବଳ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ହେଇଗଲା। employing a variety of teaching methods and modes of assessment which cater the diversity among children, ये ସବୁଠୁ among learners ये ସବୁଠୁ ବଡ଼ yes। ଯଦିଓ ପଜିଟିଭ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପସନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ବେଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ଏଠି କହିଛି କ୍ୟାଟର ଟୁ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ସ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ତେଣୁ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ମେଥଡ୍ସ, ମୋଡ୍ସ ଅଫ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କଲେ ହିଁ ଡାଇଭର୍ସିଟିକୁ କ୍ୟାଟର କରିପାରିବେ ବା ଠିକ୍ ସେ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିବେ। Teachers do not give the meaning of new words to learners directly because अजय सब ठीक, चलो बहुत बढ़िया बढ़िया स्टार्ट हिच। ऑप्शन नहीं। Teachers do not give the meaning of new words to learners directly because thank you directly the one. Learners already know the meaning of the word. Vocabulary will not be enriched. Learners do not like to be given the meaning of words. ନାଇଁ ତମମାନେ ଠିକ କହିଲ, exactly wait କରିଥିଲ D କୁ। It prevents learners from discovering the meaning through puzzling out using clues। ତେଣୁ let them discover the meaning directly, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏନି। ଶ୍ଵେତ ପଦ୍ମା, very good। Which of the following is an instance of non-formal learning? Yes, non-formal କହିଛି କୋଉଟା ହବ? Yes, ଏଠି non-formal କହିଲେ ଦେଖ, फ्रेंड्स पाखରୁ ଶିଖିବା, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଠୁ ଶିଖିବା, ଆର୍ଟ ଟିଚର ଠୁ ଶିଖିବା, ଏଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ଶିଖୁଛି।
करेस्पोंडेंस होची नॉन फॉर्मल आंसर इज ए बहुत बढ़िया आम घर को गेस्ट नास्ता बना चली क्लास भी करुच्ची देखिकी गेस्ट माने नास्ता भी सेमती हवा दरकार पाठ जमती होची हाँ दीप्तिमयी बरम कमेंट बॉक्स रे टिके इनएक्टिव रुह किंतु सियाडे नास्ता को खराब करिवोनी नहले पड़ी जिवो आउ केबे आसीनी केबे गोटे थर गेस्ट माने कोन स्पेशल गेस्ट की द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग मीन्स कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग कहले कोन क्वेश्चन बड़ बड़ देखा जाउछ किंतु ओजन नाही आराम से कर दबो सब एबे जाए तो ठीक अछि 5 रु 5 करेक्ट कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच बार बार लगातार ए जिनस हम डिस्कस करू छे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टा so involving the students in a variety of activities to encourage them to learn new words and structures by accommodating them with those that they have already learned the previous knowledge सहित connect करके न्यू वर्ड्स बा न्यू नॉलेज बा न्यू स्ट्रक्चर जहाँ भी कही न्यू नॉलेज गेन करवा प्रीवियस नॉलेज को यूज करके थ्रो वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज तो यहाँ तो कंस्ट्रक्टिविज्म भाया लगुच टीचिंग रूल्स ऑफ ग्रामर नहीं प्रैक्टिस माध्यम कंस्ट्रक्शन किसी नहीं हेल्पिंग लर्नर्स एक्वायर न्यू वोकैबुलरी बाय स्टडिंग लिटरेचर इंटेंसिवली एमती भी नुह टीचिंग न्यू वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स यूजिंग वेराइटी ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स फॉलोड बाय प्रैक्टिस थ्रू ड्रिल ये भी ठीक अच्छी बट देखो ये कही कंस्ट्रक्टिविस्ट तो आंसर हो ऑप्शन ए नो डाउट ओके समस्त करेक्ट which of the following is suitable for making students responsible for their own learning very good discouraging the hobani using technology to chart and network hobani giving a lot of homework is not the right way encouraging students to ask more and more question eti jana padibo ki suitable for making students responsible for their own learning option c semane nije question pacharibe to jana padibo yes very good number 8 अच्छा एटा केवल देखि दियो तापरे अलगा गुडा देखौछि Ania while teaching paragraph construction should draw attention to हाँ हाँ आज टीचिंग इंग्लिश पेडागोजी आउ टीचिंग एप्टीट्यूड आउ पेडागोजी इंग्लिश सहित कनेक्ट हो गले इंग्लिश पेडागोजी हो जाए आउ कोन होय कि while teaching paragraph construction should draw attention to large varieties of idea originality of ideas topic sentence supporting details and connectors a range of vocabulary Ania while teaching Anita हेले करथांतु हाउ while teaching paragraph construction should draw attention to yes very good topic sentence supporting details and connectors एठी स्केल काम देइथांता ओरिजिनलिटी ऑफ आइडिया काहे की हबनी काहे की टीचिंग पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन जते बेले कुआ जाउची कंस्ट्रक्ट करची से पैराग्राफ टा स्पेसिफिक पैराग्राफ टा बनौची एठी ओरिजिनलिटी किछि न थाए पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन माने आकु नै की गोटे पैराग्राफ बना कॉन्सेप्ट ऑलरेडी थिबो कंस्ट्रक्ट ऑलरेडी आइडियाज थिबो सेतरे कोनोसी नुवा तमर परिवार नै केवल परिवार अछि सेंटेंस तार अरेंजमेंट सपोर्टिंग डिटेल्स ऑफ कनेक्टर्स रो तेनु पैराग्राफ ऑप्शन सी नेक्स्ट नंबर 9 communicative language teaching is concerned with
Communicative language teaching is concerned with teaching of vocabulary and ଏବେ ଲାଗୁଥିବ English pedagogy ଭଳିଆ teaching of vocabulary and grammar through rules of spelling and language. Teaching language to learn for written test, grammar rules to suit the audience ଏଠି କହିଛି communicative language teaching ତ ସବୁ ଦରକାର enhancing receptive ଆଉ productive skill. receptive ରେ କ'ଣ receive କରୁଛ କୋଉଥିରେ listening ଆଉ reading ରେ productive କ'ଣ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛି speaking ଆଉ writing ରେ ओके तो ହେଇଗଲା ऑप्शन डी करेक्ट 10 बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन यस 10 राइट आंसर कंक्रीट ऑपरेशनल कहिछि कंक्रीट ऑपरेशनल 7 रु 11 तो एठी एडोलेसेंस होबनी यस टोडलर माने बहुत छुआ हे गला एडल्ट्स भी बड़ हे गला एट मिडिल लेवल माने एठी मिडिल लेवल माने मिडिल चाइल्डहुड कहिछि एटा चाइल्डहुड टाकू कहिछि मिड चाइल्डहुड बा लेट चाइल्डहुड को इंडिकेट करछि तो एठी की जिबा हमें 20 सहित तो हबो आंसर करेक्ट fluency in English can be developed through fluency in English can be developed through yes creating opportunity to use target language for communication the teacher talking for most of the time the hobani eta teachers and teacher being allowed to spot the errors and correct them सबबळे error को देखुथिबो आ correct करतो किछ माने नहीं allowing students who are not confident to have the freedom to be quiet हाँ जे confident नो से आराम से चुपचाप बसिवार तांको freedom दे दियो ये भी तो हबनी तो राइट आंसर ऑप्शन ए ही हबो वेरी गुड 12 नंबर एई भितरे ही ऑप्शन रे आंसर अछि आ कोडे जिबिनी मु डी खोजिबा दरकार नहीं an effective lesson for teaching a language begins with yes see a with the confusion effective lesson for teaching a language listening the learning objective of the lesson recapitulation and motivation through fun activities कोटा more appropriate हबो अच्छा प्राय सी सहित जाइछ effective lesson for teaching a language begins with recapitulation and motivation through fun activities ପରେ ଆସିବରେ ଆଗ ଆସିବ ଏ କାହିଁକି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି କା ସହିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ତ ଆନ୍ସର ଲିଷ୍ଟିଂ କହିଛି ଲିଷ୍ଟ ଦ ଲର୍ନିଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଫ ଦ ଲେସନ ଯଦି କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖିବା ଲିଷ୍ଟ କରିବା ତାକୁ ବା ଏମ୍ କ'ଣ ଲର୍ନ କ'ଣ କରିବା ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ କ'ଣ ଟାର୍ଗେଟ କ'ଣ ସେଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ସୋ ଲିଷ୍ଟିଂ ଦ ଲର୍ନିଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ଅଫ ଦ ଲେସନ ଇଜ ଫାଷ୍ଟ then recapitulation motivation ଏସବୁ ଆସିବ ओके डी ऑप्शन कौन थिला राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड महा मुश्किल थिला हो जहाँ भी हो some noise in the language class indicates yes
ଟିକେ ଯଦି ନଏଜ୍ ଆସୁଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କ୍ଲାସରୁ ଇଏ କାହାର ଇଣ୍ଡିକେସନ୍? ଇନଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ନର୍ସ। ୟେସ୍। ହଁ, ଇନଡିସିପ୍ଲିନ୍ କରୁଛନ୍ତି କହିବା କି? ନା, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ୟୁ ଅଲ୍ ଆର୍ କରେକ୍ଟ। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ୱିଥ୍ ଲର୍ନର୍ସ ଏନଗେଜ୍ଡ ଇନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ତେଣୁ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖୁଛି ଆଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ୟୁଜ୍ କରୁନି, ଯଦି କ'ଣ ମାନେ ଅଛି? ଟିକେ ଟିକେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ୟୁଜ୍ ହେବ ତ ନଏଜ୍ ତ ଆସିବ ହିଁ। ହଁ, ଏମିତି ଭାବିବାଟା ଭୁଲ କି ଇନଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହେଉଛି କି ଟିଚର ଲ୍ୟାକ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣ୍ଡ ଇନକମ୍ପିଟେନ୍ସ ଅଫ୍ ଟିଚର କହିଦେବାଟା ଭୁଲ। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ପଜିଟିଭ ରହିବା। ଇନକ୍ୱାରି ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ହଁ, ସୁପ୍ରଭା ଠିକ୍ ଜାଣିଛ। ଛୁଆ ମେ ବି ପୋଏମ୍ ରିସାଇଟ୍ କରୁଥିବେ, ନହେଲେ ପ୍ରୋଜ୍ ପଢ଼ୁଥିବେ। ରିଡ଼ିଂ ତ ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍। LSRWରେ ଯାଉଛି ଇନକ୍ୱାରି ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ୟେସ୍। Does not place students in thought provoking situation. Thought provoking situation ରେ ତ ପକାଏ, କାରଣ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଏନକରେଜ କ୍ୱାଇଟ୍ ଚୁପଚାପ ରହିବାର ନାହିଁ। Does not nurture creativity. Does not ତ ନୁହଁ, ଏ ସବୁ କଟିଗଲା। Allow learners to raise questions. Question ପଚାରିବା ପାଇଁ allow କରେ, right? D ହବ। Effective learning takes place when students are effective learning takes place when students are good at preparing for examination की। हाँ, कौन हवा दरकार? टू वे कम्युनिकेशन। नहीं रे। A play can be taught best taught by a play can be best taught by केमती बेस्ट वे रे प्ले टाकू पढ़ा जाई परिबो? Stage the play. After working in groups and understand the plot of character को पूरा बुझी जिवे जतबेले निजे प्ले टाकू करिवे। सो एक्टिव रहिवार अछि। केवल रीड साइलेंटली हेले हबनी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस पचार देले हबनी। एटा कहूची प्ले। ए प्ले कैन बी बेस्ट टॉट बाय। Best way to sensitize young learners to rhythm and intonation is 17 the right answer. Option D ସହିତ ପ୍ରାୟ best way to sensitize young learners to rhythm and intonation is by reading out poems in different matter and explaining them ଭଲ ନା by making the learners listen to nursery rhymes and recite them effectively ଭଲ କୁହ। ଏଠି କ'ଣ କହିଛି? କ'ଣ ଶିଖିବେ ଦେଖ। ରିଦିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟୋନେସନ୍ କଥା କହିଛି। एक्सप्लेनेशन एटी कौन आसिला? रिदम एंड इंटोनेशन कथा कही तो लर्नर्स लिसन टू नर्सरी राइम्स and recite them effectively. A is more appropriate, not D.
Knowledge of more than one language. Okay. Knowledge of more than one language confuses the learners while learning a new language. ताମାନେ more than one language ଶିଖିବା କଥା ନୁହଁ, ନେଗେଟିଭ କହିଲା। It's very helpful in teaching and learning a new language. अच्छा এটা पॉजिटिव କହିଛି। cause interference नेगेटिव କହିଛି। becomes a burden नेगेटिव କହିଛି। ଗୋଟେ ହିଁ पॉजिटिव ଅଛି, ସେଟା ହିଁ आंसर, खत्म कहानी। चलो, a sight word in a vocabulary item। sight word କହିଲେ କ'ଣ, ଆଉ ସେ କ'ଣ କରେ? साइट माने देखू देखू क्लैरिटी आसी जाए। The 19 रो right answer, that the reader recognizes and finds meaningful on sight without a complicated analysis। very good, भाई समस्त ठीक अछ। एठी आ गोटे जिनस तुम मानकर अवगत निमंते जणाई दिया जाउछि 11टा समय रे EVS पेडागोजी क्लास अछि यूट्यूब रे, एंड इवनिंग रे हमर रहिबो रीजनिंग रो मैराथन एप्लीकेशन रे, रीजनिंग क्लास रहिबो आप रे। EVS पेडागोजी यूट्यूब रे 11टा रे, रीजनिंग एप्लीकेशन रहिबो इवनिंग रे, एक्जाक्टली टाइम मो नोटिफिकेशन रे पठे देबी। A good introduction to a text should be, ऑप्शन डी टा कोन बुझेबी, that needs proper visual understanding of the context। sight word एटी कोइ छि sight word, देखो प्रॉपर विजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेक्स्ट माने एटी तमरो दिमाग लगेवा को पड़िला। बट साइट वर्ड टा एक्चुअली कोन जोटा देखु देखु बुझी हे जाए, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस, विदाउट ए कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस रीडर रिकॉग्नाइज कर दिया और फाइंड्स मीनिंगफुल, एटा को कहा जाए साइट वर्ड। गुड इंट्रोडक्शन टू ए टेक्स्ट शुड बी। यस सुनंदा, वेरी गुड एवरीवन। स्वागतिका, बबली, दीप्तिमयी, सविता, सोनाली, रोजा, पद्मजा, सस्मिता, मनु, गीतांजलि, साई, रश्मिता, पंकजिनी, संस्कृति, थैंक यू। शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଟା telling the students anything that they can find out for themselves by reading the text, ଏମିତି ନୁହଁ। good introduction ଟା ସବୁବେଳେ short ଥାଏ and to the point ଥାଏ। ଦେଖ ତମେ କହୁଛ telling the students anything that they can find out for themselves by reading the text, ସବୁ ଜିନିଷ introduction ରେ ଯଦି ରଖିଦବ ତାହେଲେ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିବ ରେ? ହଁ, ହଉ ଆଗକୁ ଯିବା।
Yes. Scanning means dotting very much of a text to search for. ଟିକେ ରେ ପାଣିଟା ଓଭରଫ୍ଲୋ ହଉଛି, ଟିକେ ମୋଟରଟା ବନ୍ଦ କରିଦଉଛି। Yes, 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 ଆସିଗଲି। ହଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଗଲା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିବାଟା ବି। ହଁ ଅଛ, ଚଲୋ। ସ୍କାନିଂ କହିଛି ତ ଜାଣିଛ ତମେ, ସ୍କିମିଂ ହେଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଇଡିଆ, ସ୍କାନିଂ ହେଲେ ପିସ୍ ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ। କୋଉଠି ଅଛି ପିସ୍ ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ? ବାସ୍ ସରିଲା, ଅପସନ ବି ରାଇଟ୍। ପାଣିର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସଟା ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ଆମକୁ ମିଳିଯାଉଛି ତ ଆମେ ଲସ୍ କରି ଚାଲିବା, ଯାହାକୁ ମିଳୁନି ସିଏ ପାଣି ଟିକେ ପିଇବା ପାଇଁ ବି କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛନ୍ତି। 22 ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ୟେସ୍, to create number of opportunity for learners to use language meaningfully। ବହୁତ ବଢିଆ କରିଛ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ନାଇଁ ଆହୁରି ଜଲ୍ଦି ବି ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ବନ୍ଦ କରିକି, ବଟ୍ ଗୋଟେ ହନୁ ମାଙ୍କଡଟା ଆସିକି ବସିଥିଲା, ଫାଇଟ୍ ହେଲା ହନୁ ଆଉ ଗଧିଆ ଭିତରେ, ଗଧିଆ ଜିତିଲା। 23, which of the following will help learners take greater responsibility for their own learning? Very good, peer assessment। ବହୁତ ବଢିଆ, ଭଲ କରୁଛ ଆଜି ସମସ୍ତେ, ପ୍ରାୟ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ କରିଛ। When young learners are taught to improve their spelling and punctuation, they will 24 ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହଉଛି when young learners are taught to improve their spelling and punctuation, improve their accuracy is the right answer। Okay, supervised reading session ମାନେ टीचर सुपरवाइज करेंगे। सुपरवाइज माने कौन, टीचर देखुए तुम पढ़ो कौन, किंतु एटी कहिछि हेल्प लर्नर्स टू टेक रेस्पोंसिबिलिटी, ग्रेटर रेस्पोंसिबिलिटी। से टीचर तो देखुछन टीचर रेस्पोंसिबिलिटी नै गले, पीयर असेसमेंट रे पीयर रहिला माने स्टूडेंट रो रहिला। 25, instead of asking questions and getting answers from her learners, a teacher gives some short texts and ask her learners to frame questions। her primary objective is to application पिले सब रेडी हेकी थाओ, गाली सेशन गोटे आज आरंभ, गाली सेशन तो आरंभ हो आज इवनिंग रे, रीजनिंग तो गोटे हम आ गोटे गाली हम। 25,
वेरी गुड। टीचर कौन करुछंती क्वेश्चन पचारू नांती आंसर मागु नांती से कौन करुछंती शॉर्ट टेक्स्ट दे देउछंती आस्क फॉर लर्नर्स टू फ्रेम क्वेश्चंस निजे क्वेश्चन बनाओ कहउछंती या द्वारा एनहांस हबल लर्नर मानको भीतर क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग स्किल बी करेक्ट 25 टा सरला और 25 टा रहिला 25 मोर क्वेश्चंस अफरोज मधुस्मिता सोनाली लीना निर्जरा समस्तंकु कोई भी भलो पड़ुछ स्टे कनेक्टेड अंडर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग लर्नर्स एनकरेज टू कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रे लर्नर कौन करिवे कंस्ट्रक्ट करिवे तो अवॉइड एरर प्रैक्टिस लैंग्वेज लर्न द ग्रामर बाय रोट पुणी मेकानिकल ड्रिल नाई डिस्कवर करंतु जोटा भलो सबटु सेटा करिवे काहे कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कहिछि ना हां बेस्ट जोटा लागिवो तुमको सेटा ही आंसर हबो After a storytelling session, the learners are asked to change the ending of the story. Story कहले मस्त वाला किए गुरुमा गुरुमा बढ़िया गप कहले किंतु लास्ट रा एंडिंग टा निजे कलेनी छाड़ी देले छुआ ऊपर तमे एंडिंग करो हाँ हैप्पी एंडिंग ना सैड एंडिंग तम ऊपर डिपेंड करछि तमे करो दिस विल हेल्प द लर्नर्स या द्वारा लर्नर मानकर कोन हबो मुंड झड़ हबो नहीं कि मुंड खराब हबो आउ समस्त यूनिक वे रे एंड करिवे जेमती तमे एंड करिवो मु करबिनी प्रज्ञा जेमती करिवे सेमती संस्कृति करिवेनी कि विज्ञ प्रभाव करिवेनी राइट वेरी गुड so become imaginative and creative is the right answer बहुत बढ़िया करिछो thank you when young learners are asked to read a text silently they should be instructed अब दुईटा ऑप्शन देखैबी किंतु ए दुईटा देखि सारो बहुत बढ़िया शाबाश when young learners are asked to read a text silently they should be instructed to infer the meaning of new words from the context and read with comprehension text को silently पढ़िबा को कहिसंती के young learners are asked to read the text silently सेमानंकु कोन इंस्ट्रक्शन दवा दरकार to infer the meaning of new words from the context and read with comprehension to pay special attention to grammar items used in the passage to read fast even if they don't comprehend the meaning to stop reading whenever they encounter a difficult word or phrase to stop reading whenever they encounter or a difficult word or phrase माने से रही गले बहुत जल्दी रही जिवे कारण डिफिकल्ट वर्ड आसिला माने रही जिवे आउ जते जल्दी जल्दी पढुछ पढि चलो बुझ न बुझ पढ कहूची एटा भी हबनी पे अटेंशन टू ग्रामर आइटम्स यूज्ड इन द पैसेज ग्रामर टा बहुत बड़ जिंस होगला यंग लर्नर सेठी अछि टू इन्फॉर द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स नुआ वर्ड जहां लिखुछ लेख फ्रॉम द कंटेक्स्ट एंड रीड विथ कंप्रेहेंशन पढि चलो तो जहां नुआ वर्ड ताकू लेख बा मीनिंग टा देखो एतिकी जिंस जोटा आमे स्कूल रे भी करूथिले मने पका इंग्लिश सर मैडम बुझेबा पूर्व कौन करती आग कहती पढ़ पढ़ला जो डिफिकल्ट वर्ड सब लेख बा अंडरलाइन कर तापर तार मीनिंग कहवा सहित बुझे दिंती दिन पचारिकी धुमाल पिटती 29 द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग रोल प्ले इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग रोल प्ले इज रोल प्ले रो मुख्य उद्देश्य कौन right answer is option B to improve the communicative competence very good तो निजर मनर भाव को प्रकाश करि परिबा इन द राइट वे रोल प्ले रेटा हुए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग रोल प्ले इज to improve the communicative competence means the interaction skill will be improved right
रोल प्ले द्वारा तुम से क्यारेक्टर भितर पशिज दैट इज ए गुड थिंग इजी हो जाए मजार सहित मस्ती सहित एंजॉयमेंट सहित लर्निंग हो जाए 30 constructivist approach to language teaching expects the teacher to पुणी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच बार बार आज कंस्ट्रक्टिविज्म भितर पशुचे 30 30 रो राइट आंसर कौन हम constructivist approach to language teaching expects the teacher to make learners prepare their own textbook help construct knowledge using their experience so more appropriate is c is the right answer thank you बढ़िया when a test item expects the learners to use tense forms voice connectors prepositions articles accurately such an approach can be called लर्नर मान को कौन कहूँ टेन्स फॉर्म को ठीक से यूज करो वॉइस ठीक से कनेक्टर्स ठीक रे प्रिपोजिशन आर्टिकल्स सब एक्यूरेटली ठीक जगह रे यूज करिबो सच एन अप्रोच कैन बी कॉल्ड देखो आज बहुत सिंपल क्वेश्चंस अच्छी बट येट जानिबा निहाती दरकार गोटे भी भूल हवा कथा नुह इंटीग्रेटेड ग्रामर टेस्टिंग इज द राइट आंसर जो मैंने ए करिचो वेरी गुड ट्राई करिचो इंटीग्रेटेड माने सबको मिसेकी कांटी दियो इंटीग्रेटेड मिक्स्ड होबनी एठी मिक्सचर वाला नुह टिके वर्ड रो खेल अच्छे एठी मिक्स्ड ग्रामर टास्क आउ इंटीग्रेटेड ग्रामर टेस्टिंग कहीं एठी टास्क आउ टेस्टिंग दुईटा अलग अलग वर्ड आसला एठी टेस्ट वर्डटा यूज होइछ एमती भी देखले भी हबो एंड आम इंटीग्रेटेड वर्ड को एजुकेशन रे बेसी यूज करूचे मिक्स्ड तुलना रे इंटीग्रेशन ऑफ all these parts of speech or parts of grammar integrated grammar testing minimal pairs are usually used to give practice in आ गोटे ऑप्शन रे कौन अच्छे देखई दउची रीडिंग अच्छी minimal pair are usually used to give practice in vocabulary structure pronunciation reading pronunciation यस का सहित किसी कनेक्शन नहीं से निजे को केमती से वर्ड को केमती हमें प्रोनाउंसिएट करछे दैट इज द राइट आंसर 33 प्रेडिक्शन आज ए सब स्किल इज एसोसिएटेड विथ प्रेडिक्शन टा का सहित एसोसिएट कार सब स्किल रे जाउछ प्रेडिक्शन यस अगेन सी इज द राइट आंसर रीडिंग बहुत बढ़िया a teacher gives many sentences and asks her students to arrange them into a letter using appropriate connectors the skill that is chiefly involved in this task is या द्वारा को स्किल डेवलप हो छुआ भीतर many sentences छुआ को दे देले अरेंज करने को कहले into a letter चिट्ठी बनैबार अच्छी यूजिंग अप्रोप्रिएट कनेक्टर्स कोठी को कनेक्टर लगे कथा कनेक्ट करिकी ठीक से मीनिंगफुल लेटर गोटे करने कहते एथिरे छुआ को टास्क देछंती व्हाट इज द राइट आंसर यस ऑर्गेनाइज करिवो when a teacher uses lessons in science and social science to teach language such an approach can be termed as साइंस और सोशल साइंस पढ़ेला बेले रो जिनस गुड़ाक लैंग्वेज टीचिंग रे यूज करूछंती सच एन अप्रोच एटा आराम से कर दबो
When a teacher uses lessons in science and social science to teach language, it is language across curriculum. बहुत बढ़िया, लक्ष्मी, उषा रानी, सुप्रभा, विज्ञान प्रभा, निहारवाला, वर्षा, सुशील, thank you. Discipline wise no है, language across the curriculum, she correct. The most important feature of an effective language classroom is opportunity for learners to interact, evaluate, imitate, relax. The most important feature of an effective language classroom is opportunity for learners to interact, evaluate, imitate, relax. Very good. Interacting right answer. Interaction of other effective language classroom kotha koich. In learning a new language, multilingualism is no doubt an asset. Asset माने कोन जहा आहुरी enhance करिवो, help करिवो, accelerate करिवो learning को. तो multilingualism new language learning रो asset हिसाब रे काम करे, आहुरी आगो को नबारे help करे, enhance करे skill टाको, asset हो right answer. D कौन सी हिसाब रे नो methodology गोटे नो. Multilingualism is not a method. Sitting arrangement should be flexible in a language classroom because कहीं की sitting arrangement टा flexible होबा कथा language classroom रे. Flexible sitting arrangement हेले कौन होबो? It reduces responsibility of teacher. Teacher रो responsibility reduce करिवार हमर किछि इरादा नहीं. इरादा हला learning को effective करिवा, learning outcome आनिवा. It helps teacher to maintain discipline ना. It helps learners change their place frequently. कहीं की frequently change करिवी. Yes, it facilitates pair work and group work. Group work करिवारे, project करिवारे, peer assessment रे, group task, group work रे help करिवो. तेनु D right answer. Learners acquire a language by learners acquire a language by structure analysis रे हबनी. literature पढ़ी के भी हुए नहीं. learning about culture of the speakers of language भी नहीं. using the language in a natural interactive environment. तमे जेते language शिखिवा को बही धर की चेष्टा करे किंतु actually जेते से environment को जीवो और natural interactive environment रे चेष्टा करिवो, learners acquire a language easily. तो सबुठु easy होची option D. easily language acquire करी हबो, language जानी हबो. teachers should not give corporal punishment to learners because teacher कहीं की corporal punishment ଛୁଆଙ୍କୁ ଦବା କଥା ନୁହଁ. Very good. Samresh, Sonali, Sai Pankajini, Suchismita, Subhadra, Sandhya Rani, Pragya, Lakshmi, Sunanda, Sanskriti, Dipti, Mayini Harwala, बढ़िया लिपिका, स्वर्णमयी, सविता, सुप्रभा, thank you. Approach, बबीता, मन्नू, thank you. आलोक, संजय, महावीर, असीम, समस्तଙ୍କୁ धन्यवाद. It creates stress and fear. Thank you. Very good. 10टा क्वेश्चन. ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड implies. ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड कहले कोन? वोकेशनल एजुकेशन नु है.
following the natural stages of child development, jack of all trades, सेमती भी नहीं. Harmonious development of physical, emotional and mental facilities is the right answer. The right answer A ही होगा. A teacher should help the learners acquire rich imagination and ability to think out of the box to develop the learner's skill of. A teacher should help the learners acquire rich imagination and ability to think out of the box to develop a learner's skill of. रहीगला कि कमेंट बॉक्स ना चली तो ठीक डी सहित मुझे जाऊँगी क्रिटिकल थिंकिंग बट टिके एनालिसिस करके मत कहब जनरेटिंग न्यू आइडियाज कहीं हेनी कहीं आउट ऑफ बॉक्स जाऊँगी जने एबिलिटी टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स टू डेवलप द लर्नर स्किल ऑफ generating new ideas भी हो पारिबो. A teacher should help the learners acquire rich imagination. Critical thinking skill भी आसीबो, generating new ideas भी आसी पारिबो. ओके तो या भीतर कोटा मोर appropriate ए केस रे हबो. Let me know whether option D or option B. While asking the learners to read and text silently, the teacher should. बिना क्रिटिकल थिंकिंग रे एक्चुअली हाँ क्रिटिकल भीतर जनरेटिंग जाउची कहीं जनरेटिंग न्यू आइडियाज बिना जनरेटिंग न्यू आइडियाज भीतर कहीं क्रिटिकल थिंकिंग जीवनी हाँ एंड एटी जेतु आउट ऑफ बॉक्स कहिची तो एटी डाइवर्जेंट आसला जतबेले डाइवर्जेंट आसीबो सेतेबेले तो एटा हबो ना जनरेटिंग न्यू आइडियाज. ओके लेट मी नो हाँ कमेंट बॉक्स रे 43 रो आंसर करबा स्टार्ट कर देलणी. While asking the learners to read the text silently, the teacher should. एटी समस्त सी कर देलो. ask them to consult dictionary for understanding of difficult words. एटी देखो रीड द टेक्स्ट साइलेंटली द टीचर एटी कौन से प्रकार लर्नर्स पूर्व यंग लर्नर्स लगी कि सेठी यंग लर्नर लगी से क्वेश्चन रे तमे करदेलो जे वर्ड को जानिबा दरकार मीनिंग जानिबा दरकार. एटी होची आस्क द लर्नर्स टू राइट द समरी सो दैट से माने एक्चुअली बुझिले ना नहीं अंडरस्टैंडिंग केते हिची जाना पड़िबो गोटा. Lexical cohesion devices are 54. Words phrases used for connecting ideas. Yes. When a teacher uses realia to teach vocabulary and grammar, see. Critical thinking टा कौन लिखिछ broad term learners out of box thinking भी करिवो और divergent way रे करिवो so more appropriate critical thinking. Okay ठीक very good thank you. Realia माने real सहित related real life सहित related real object सहित related real action सहित related
everyday life सहित related, actual life, real life सहित connected. Okay. To create and sustain interest in learning, to create and sustain interest in learning, 46. To create and sustain interest in learning, learners should be told stories. Learning should not be labeled as slow, average. Yes. Involve the students in activities, make them teach each other. So ସବୁ ତ ଠିକ ଲାଗିଲା ରେ, but interest in learning କହିଛି, the involve the students in activities is more appropriate. C correct, ତମ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଠିକ ଅଛ. As a facilitator of learning, the teacher should. ଭଲ ପଢୁଛ ଆଜି, କଣ ହେଇଛି ପୁରା ଠିକ? ମୁଁ ଦେଖିବି 11টাରେ ଅଛି EVS ର pedagogy 11 AM. ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ କରିବ, ଆଉ ଟିକେ ସେୟାର ବି କରିଦେବ, ଲିଙ୍କକୁ ଦେଇଦେବି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ. ଯେଉଁମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରିନ ନିଶ୍ଚୟ ଜଏନ୍ କର. ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଡୁ ଲାଇକ୍. As a facilitator of learning, the teacher should opportunity ଦବା ନାଇଁ କି, syllabus ସାରିବା, extra information ରେ load କରିବା, explain in detail ଅପେକ୍ଷା opportunities wordଟା ବେଶୀ appropriate ଜିନିଷଟା. ତେଣୁ 47 ର ଆନ୍ସର D ହବ. ହଁ, thank you everyone for your likes. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଥିବାରୁ, and share ବି କରିଦେବ friends ମାନଙ୍କ ସହିତ. Those are in need of such videos. During dramatization, when a teacher uses empathy as one of the descriptors for assessing the learners, she is assessing their ability to ସ୍ୱାଗତିକା ଏବେ ପୁରା ଭଲ ଲାଗିବ, don't worry. During dramatization, when a teacher uses empathy, 48 right answer. Empathy ଅଛି, so sympathy add कर दे, sympathize with the character. During dramatization, when a teacher uses empathy as one of the descriptors for assessing the learners, she is assessing their ability to sympathize with the character, deal with the character, connect with the character. Dramatization rate, teacher uses empathy as one of the descriptors for assessing the learners. She is assessing their ability to sympathize with the character. Yes, 49. Poetry recitation help learners too. देखिए क्वेश्चन, पोएट्री रिसाइटेशन द्वारा छुआंकर कौन लाभ हुए? सोनाली कहते सर मु ब्रश करी नहीं, नॉट मैंडेटरी. करिवो किसी असुविधा नहीं, राति 4टा जाए पढ़ी एवं शोक उठुव तो केमती कर ना. लर्न प्रॉपर इंटोनेशन एंड स्ट्रेस, को जगह को को वर्ड को स्ट्रेस दबो, केमती प्रोनाउंसिएट करिवो, कोठी रहिवो, कोठी चलिवो. पोएट्री रिसाइटेशन हेल्प्स लर्नर्स टू लर्न प्रॉपर इंटोनेशन एंड स्ट्रेस. लास्ट क्वेश्चन, which of these would be a valid learning objective for teaching a drama? Okay, Madhusmita, very good. Multitasker good asu. 50 ର right answer କୁହ. Valid learning objective for teaching a drama. संस्कृति 48 ए हबो कहूछ. I will check. हाँ, ए ही हबो, तो मु तो ए कहिछि ना, देखो ना. हाँ, 50. Learners will be able to speak fluently, correct stress and annotation भी देई परिबे.
लर्नर्स विल बी एबल टू एक्ट इफेक्टिवली एक्टिंग ପାଇଁ ଏଟା କରାଯାଉନି ଡ୍ରାମାଟା ଆକ୍ଟିଂ ଶିଖିବେ ବୋଲି କରାଯାଉନି ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବେ ସେଠି କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖିବେ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ଆସିବ କରେକ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନୋଟିସ୍ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ learners will be able to understand what is drama na learners will be opportunity to dress up in a different costume nahi right answer is option A correct thank you बहुत बहुत धन्यवाद समस्तଙ୍କୁ many thanks from exploring goals take care stay connected with exploring goals always and 11 ରେ ଦେଖା ହବା ଆଉ घंटे भी कम समय अच्छी जी जहाँ करवा कथा काम सारी दियो ईवीएस रो क्लास ओके ओके थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को स्टे कनेक्टेड विथ एक्सप्लोरिंग गोल्स लाइक शेयर कर दबा देखा हवा हां 47 पाखापाखि रह गला साई प्रभा वेरी गुड 47 रखि दैछन 47 सुप्रभा भी 47 स्वाति भी अरे 47 गोटे भलो मार्क रखिछ समस्त देवेंद्र 44 बहुत बढ़िया किछ असुविधा नहीं तो मते लागु जे समस्त 40 प्लस तो रखि थिबो 49 नीरजा वेरी गुड ओके थैंक यू समस्त मार्क कमेंट करिवो 11 रे देखा हवा ईवीएस पेडागोजी ईवीएस रो सेशन टेक केयर स्टे कनेक्टेड थैंक यू जय जगन्नाथ